Very good morning, friends. So I hope you're all doing safe and healthy. Well, in this particular month, I've started a series on IFRIC 12, precisely to say that we're covering Appendix D of Indes 115, and that deals with SCA, that is Service Concession Arrangements. In the previous videos in this particular month on this particular topic, I have mainly, covered what is the litmus test in terms of saying that a particular arrangement would enter into this particular IFRIC. And also, we saw a three-step model which we decided is going to be something which is concrete in nature, but of course there is a subjectivity as well, where we applied the concept of a control test in step 1 and another control test in step number 2, and looking in terms of step number 3, is it a construction of a new infrastructure or maybe an upgradation of an existing infrastructure? Now, the thoughts which comes to the mind is that once this IFRIC 12 becomes applicable, once IFRIC 12 is triggered, then what is the accounting implications of this particular IFRIC? Now, there are, you can say, a total of 3 kinds of accounting model which have been given in this particular IFRIC. So I would say one would fit into any one of the particular model. But typically I would say there are basically 2 models. One is nothing but it's a blend of the 2. So let's have a quick look also that once you fall under this IFRIC, then there could be, troubles in terms of deciding under which particular accounting model you would follow. So let's find this out in this particular video, that once IFRIC 12 is triggered, then what are the accounting implications? अनअकैडमी पर जो बच्चे अपने इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्लस बैचेस के अलावा आइकॉनिक बैचेस भी अवेलेबल है। सर, आइकॉनिक बैचेस और प्लस बैचेस के बीच में क्या अंतर है? भाई, ये समझ लीजिए कि आपको जो प्लस फीचर्स के अंदर एडवांटेजेस मिलते हैं, उनसे एडिशनल बेनिफिट्स यानी जो प्लस फीचर्स में आपको मिलते हैं वो एडवांटेजेस तो आपको मिलेंगे, लेकिन उनके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि LMP लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जल्द आने वाला है। लेकिन कुछ फीचर्स जो अभी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनमें नंबर 1, आपको हर सब्जेक्ट की एक प्रिंटेड बुक मिलेगी, यानी इंटरमीडिएट के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिखी गई बुक्स, प्रिंटेड हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। 1:1 डाउट सॉल्विंग आपके सेशंस होते हैं, 1:1 पर्सनल कोचिंग आपको मिलेगी, और इसके अंदर आपके साथ वक्त वक्त पर कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं जिनके साथ आपके सेशंस होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, आपको कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, इन सब की गाइडेंस आपको उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा मिलेगी। और साथ में आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं और नेचुरली आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव मेंटरिंग इसके अंदर आने वाली है, जिसके अंदर आपको एक कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान आपके लिए बना के दिया जाएगा। डेडिकेटेड मेंटर्स आपको दिए जाएंगे जो आपका कस्टमाइज प्लान बनाएंगे। आर्टिकलशिप के अंदर आपको उसके अंदर गाइडेंस मिलेगी। कहीं भी आपको एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी को लेके, कहीं कंसेप्ट्स को लेके क्लैरिटी चाहिए, तो वो सारी डिस्कशंस आपके साथ होंगी। सो 1:1 लाइव मेंटरिंग विल बी अवेलेबल इन दीज आइकॉनिक प्रोग्राम्स। अब आते हैं एवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं और उसके साथ साथ आपकी इवैल्यूएशन होती है, जिसकी एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको दी जाती है, जिसके अंदर 40% कंप्लीशन पर आपका एक टेस्ट होता है, फिर अनदर 40% पर यानी कि 80% ऑफ द टोटल कोर्स पर एक टेस्ट और कंडक्ट किया जाता है, और फिर आपका जब फाइनली अनदर 20% यानी 100% कोर्स कवर होता है, तो उसके अंदर आपके ये लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और उसकी आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाती है, ताकि जहां भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, जहां आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो पॉलिशिंग एंड्स बिफोर आप एग्जामिनेशन में जाएं, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके दी जाएगी। अब सवाल आता है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सर मुझे क्या कॉस्ट बैठेगी? तो भाई आपको ये बता दें कि इसके अंदर अगर आप 12 मंथ्स प्लान करते हैं, जो कि मुझे लगता है बनता है फॉर बोथ द ग्रुप्स,
तो 12 मंथ्स के अंदर आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है दैट इज ऑन अ पर मंथ बेसिस, ये आती है तकरीबन 33,188। यानी इस पर भी आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CAKB10। ये आपकी फीस बैठती है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट ऑन अ पर मंथ बेसिस। और इसी तरीके से अगर इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के आप कॉम्बो ऑफर्स प्लान कर रहे हैं कि भाई पहले फाउंडेशन फिर उसके बाद इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप 24 मंथ्स का प्लान कर सकते हैं जिसमें आपकी इंटर फाइनल दोनों की फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर जो पर मंथ कॉस्ट बैठती है दैट इज अराउंड 2750 अ मंथ। इस पर भी आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CAKB10। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और दी जाए एंड दैट इज भाई इसके अंदर एक आपके लिए बड़ी शानदार इसके अंदर ऑफर है और वो ये है कि इस वक्त एक बम्पर ऑफर चल रही है। मतलब आप आइकॉनिक बैचेस अगर प्लान करते हैं और 12 मंथ्स इसके अंदर प्लान करते हैं या 24 मंथ्स प्लान करते हैं तो इस पर 12 मंथ्स पर 2 मंथ्स एक्स्ट्रा है एट द सेम कॉस्ट। और अगर 24 मंथ्स आप प्लान कर रहे हैं तो उस पर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा है एट द सेम कॉस्ट। लेकिन ध्यान दीजिए ये ऑफर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है और 11 से लेके 14 अक्टूबर को ये ऑफर समाप्त हो जाएगी। तो करिए अपनी प्लानिंग और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। भाई इंतजार किस बात का है, आइए लेट्स क्रैक इट। Well, as you can see that I have made a particular chart where you can see that I've divided in a total of 3 parameters. The first parameter is indicating what you call a financial asset accounting. Well, as the name is suggestive, financial asset, well, of course, it immediately reminds you on Ind AS 109. And that's rightly remembered that when you say that it's a financial asset accounting, it is creating a financial asset in the books of the operator. The second parameter you can see is the intangible asset accounting, and immediately what comes to the mind is Ind AS 38. That means if you are going to follow the intangible asset accounting, you are going to follow the implications of Ind AS 38. And then it is possible that you fit into neither a financial asset accounting nor an intangible asset accounting. Mind you, I'm saying you're falling in none of the two. Then in this particular case, IFRIC 12 is not applicable. So it is also that there is, a possibility that your particular accounting is falling, both in terms of financial asset accounting and intangible asset accounting, which is what you call a bifurcated model. In the coming videos, I will also discuss, take examples in terms of how do you decide that one is falling in a FA, financial asset accounting, or intangible asset accounting, or you fall in a blend that's called a bifurcated model. But that would be later. So let us first see a very basic input in terms of how do you say that the operator is going to follow a financial asset accounting. If he's got, you can say, a contractual right to receive cash, or maybe another financial asset, or at the direction of the grantor. So for the construction services, then we can say if the answer is a yes, then we will say he is supposed to recognize a financial asset in the books of accounts, because if you're able to prove that he has got an unconditional right to receive cash or another financial asset, then it fits into the financial asset accounting model. Now, how do you make an assessment of the same is something we're going to see, as I said, later when we come to some more examples. The second is, let's say, for example, we are not able to zero down on the fact that, this is giving an operator an unconditional contractual right to receive cash or another financial asset. Then the possibility could be that the operator, may be getting a right to charge the users of the public service. As we've already said, that this IFRIC becomes applicable when, the operator, that is the private entity, is providing public services on behalf of the grantor. So if the operator gets a right to charge the users of the public service, then it creates, you can say, an intangible asset, because he's getting indirectly, you can say, a right, a license to charge the users for the public service. But in a situation, if you say that we are not fulfilling any of the parameters, neither an unconditional right to receive cash or another financial asset, nor a right to charge the users of the public services, then of course this particular IFRIC cannot be applicable.
So this is what we are discussing, is the accounting implications if IFRIC 12 gets triggered. Now, in the next video, what I'm going to do, if this IFRIC 12 is not triggered, then what? Then what kind of accounting are we going to apply? So wait for the next video. And that's all in this video. Thank you for watching. Take care and goodbye.